Yeah. Good evening, all. Today we are conducting ANMI WR's 102 Knowledge webinar on option trading strategies in association with Dravyaniti Consulting. The main purpose behind today's webinar is to raise awareness about option different strategies, which can be used in bull market as well as in bear market. However, in today's webinar, the speaker is going to discuss on how to make money by using different option trading strategy, like using option trade strategy through Algo. And I hope it will definitely help you in trading option. Now, I welcome our guest speaker, Mr. Devang Jhaveri, co-founder, Dravyaniti Consulting LLP. I request Mr. Devang to start the webinar and discuss on the subject. Thank you. Thank you, Vaibhav, for the warm welcome. I've been really happy to be here speaking with the ANMI members. It's my sheer privilege to be here and, having a guest audience like the broking members of your fraternity. I'm absolutely overwhelmed. Thank you once again for giving me this opportunity. So, dear members, I would want to share a small strategy with you regarding options. Before that, I will build up my case of what it is. So, let's begin. I will share my screen and you need to tell me whether my screen is visible. Yes, it is. Okay, thank you. I also will be asking you questions. I know we don't have an interactive session, but I will assume that someone is answering me and I'll go ahead. So that's kind of part of my style of teaching or, conducting a webinar. So, and I'll continue with that. So here we go. So the agenda for today is introduction. I'll give you my brief introduction to Theta. My strategy is based on Theta. Introduction to the strategy, statistics on strategy, which we have backtested, and summary. I'll briefly introduce myself. I am Devang, a chartered accountant. I've played various roles in information technology, though I was a chartered accountant, but my major role has been in IT. And I have been with companies like GE Consulting, Deloitte Consulting, Oracle, ABN AMRO, RBS, Edelweiss, and Rabobank. My last role was as a CTO of Rabobank. I have more than 25 years of trading and investing experience, and I have more than 9 years of dealing with algorithmic trading. My belief is, what do you need to do if you're going to trade? If you are a trader, you need to understand the trading environment and the risk and reward associated with it. If you understand the risk reward associated with all the dynamics in your trading environment, you just have to mobilize yourself accordingly and strategize accordingly. And we don't need to be always right in the market, but we can't afford to be complacent or negligent. If you are a lazy one, the market is not for you. Okay, so you have to be agile, you have to be quick, you have to quickly respond to the changes in market dynamics and keep a focus eye on your risk and reward. If you just keep a focus on risk and reward, बॉस मेरे को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं ये पैसा के लिए कितना रिस्क ले रहा हूँ. If you understand these two dynamics very well and constant changing environment you are assessing over and over again, there's no way you will lose money. Then there will be times that you will, make your good money that you're supposed to make. It's like being on the pitch for a while. If pitch पे टिके रहे तो छक्के मारने का chance मिलेगा, and that's what it is. I will introduce you to Theta. I know most of you are aware what Theta is, but for those who don't, or those who don't delve in Greek, I'll need to introduce you guys to Theta. So how many of you deal in options? I know I can't see it, but okay, I'll assume 60%. And how many of you are very well versed with Greeks, option Greeks? Okay,
Again, I can't see the screen, but I'll assume it's 35 to 40% of people who know. So for the benefit of 60%, I guess, I will tell you what theta is. So before reading anything that's on the screen, I mean, I'll give you a hypothetical situation. Let's assume we have a cricket match. Uh, there are you have two players on the wicket, and there are 20 balls left, and you have to achieve a target of 25 runs. Okay, 20 balls, 25 runs. And then there's a scenario that you have 10 balls left and you have to achieve a target of 25 runs. Which is a more comfortable scenario? Obviously, when you have 20 balls to pay and 25 runs to get. Why? Because you have more time. Even assume that if you have 10 balls left and you have 15 runs to get, still you will prefer 20 balls and 25 runs. Why? Because you can adapt yourself, you can change yourself. There will be a few balls which may be very difficult to face, and you can still, play them on, and you still know that you have few more balls to knock off the park. So, I mean, you have time in hand. You have number of deliveries in hand to adjust your game. One or two difficult games will not knock you off. Whereas if you have only three balls remaining and the best bowler bowls his best in that two balls out of three, and you couldn't do anything out of it, and you're left with the last ball and you have to cross the finishing line, it may be very, very difficult. So more the time you have, more better it is. Same way in options, what you do is, what you're doing in options is you're taking a bet. What bet you're taking when you buy a call option? You are betting that the underlying is going to go up. Okay, that's what you're betting on. When you're buying a put option, you're betting that the underlying is going to go down. Now, when you are placing this bet, okay, and you get 20 days in a month or 25 or 26 days in a month, wouldn't you be comfortable, you rather than you have 5 days in a month? Of course you will be more comfortable, because the probability of the situation panning out, probability of Nifty or XYZ company that you are betting on moving in the direction in which you want, the movement panning out is, the probability of that movement panning out is much higher. That's why you are willing to pay a premium. So that premium that you are willing to pay. So do you know that the time value or number of days to expiry is one of the determinant of premium that you pay to the option seller? So option seller basically takes premium, option buyer gives premium. The option buyer is giving premium because of many reasons. One of the reasons is volatility. One of the other reasons is number of days to expiry, because he has more time. He's willing to, because his bet can pan out the way he wants. That's why he's willing to pay more premium. Again, if you know the script is the spot price and the strike price both are going, if the spot price is moving fast, very fast, then he's willing to pay more premium for the additional delta and the gamma effect. So there's always a reason why he or she is willing to pay more premium. So in our case, because the number of days to expiry, when we are talking about theta, we are talking about days to expiry. Because number of days to expiry is more, he or she is willing to pay more premium. So any outcome has more likely to pan out, or more probability, if there is more or there is sufficient time. Lesser the time to expiry, the probability of certain event occurring is less. I hope this is clear. I'll move to next. Just give an example. Spot value is 18,531. We buy a strike price of 18,600. Call option
OTM, out of the money. Premium is 119.4. 6th of December 22. Expiry is 30th of December 22. You know what is the intrinsic value of an option? Intrinsic value of an option is spot price minus strike price. Here the intrinsic value is 0, since we are not, intrinsic value is only in the money options or deep in the money options. This is out of the money options. Here we see it is OTM. So we have 0 intrinsic value. Still we are paying a premium of 119 rupees. Why are we paying this premium? This premium is being paid for nothing but the time value, because you have enough time on hand. That's why you are paying certain premium. Why you are paying certain premium? Because, you know, if what you have thought pans out. So if you are saying you buy one lot of Nifty and it moves by 500 600 points, okay, and you have to pay 119 as a premium, you're okay, and you have sufficient time. Suppose you buy it at the start of the month, you have 23 22 days to for such an event to pan out. You'll be more than happy. Okay, let's take this bet because it's worth it. Market may go up and I have enough time for what I am thinking to pan out. That's why you pay this premium. If you buy a Nifty future, you would have to pay much more. And if you actually buy a Nifty ETF, you'll have to pay much more. So all you're doing is you're banking on an option. Because that option has a time limit, you are willing to take a bet, okay, in this certain time limit, this event will happen. And that's why the premium. So more the time to expiry, more the premium. That's all I'm trying to say here. It's again the same. I will just repeat. With 1 day to expiry, traders are willing to pay a time value of just petty amount. I mean, the expiry day, the premium is so less. However, the time to expiry was 20 days or more, the time value would be probably much bigger. The point that I'm trying to make here is, with every passing day, as we get closer to the expiry day, the time to expiry becomes lesser and lesser. This means the option buyers will pay lesser and lesser towards the time value. So if the option buyer pays 10 rupees as a time value today, tomorrow he would probably pay 9.5 rupees as a time value. This leads us to a very important conclusion. So hope you guys are with me. It leads to a very important conclusion, and the conclusion is, all other things being equal. I mean, I'm just not talking all the other variables. I am assuming they are equal. An option is a depreciating asset. I mean, if you buy an option, it keeps on depleting because the time value is depleting. The options premium erodes daily. And so assuming that the price is same, the other Greeks are same, your theta is depleting every day. The option premium erodes daily, and this is attributable to the passage of time. Okay. Now I have a little bit of graph here. I mean, hope you guys can see. So are you guys with me? Do you have any question? I know I have to take the questions later on, but I still, if anyone has something to clarify right now, before we move ahead, I would like to do that, because this is the basis of what I am going to train or what I am going to show you. Any questions? I mean, you can put it on the chat and I'll get those questions. Okay, thank you. So we'll move ahead. As of now. Sorry, yeah. All good. Okay, great. So this is option premium and time to expiry. Now this is days remain to expiry. I mean, this is 120 days. So you can have a typical, in a monthly one, you can have a 21, 22 days to expiry, or trading days, or calendar days. We can have 30 days to expiry. So and theta is depleting every calendar day. So this is 120 days is how many months? 4 months. So this is a 4 months expiry, and
this is the option premium. So if you are like 4 months before expiry, you're paying a higher premium. And then 100 days before expiry, you are paying a little lesser. And then again, 80 days, you are paying a little lesser. And then 60 days lesser. And then you see there's a curve. Okay. Now, what's the important thing that you have to see here is you see that the rate of change, okay, from 20 to 180 is how many rupees? 40 rupees. But from 80 to 20 is how many rupees? 60 rupees. That 60 rupees of theta decay or change in the premium has come in these many days. So sorry, we have to see the premium. So premium was 275 odd, and by here the premium is kind of 125. So from 275 to 125 is a massive. So I'll just calculate 275 minus 125 will be 150. So it's out of 350, 150 points, which is almost half, not half, kind of 45% of decay is happening. Yeah, 45% of the decay is happening very soon. Okay. And the point that I'm driving here is maybe most of the option sellers want to sell because this is the fastest. From 20 to 0, everyone knows it's going towards 0. Everyone wants to sell their options here and take this piece. But there is a huge, in terms of amount of theta decay, the huge theta decay happens from this point to this point, whereas the fastest decay happens from this point to this point, or maybe somewhere year to year. So between last, if you have 4 quarters, the last quarter will be the fastest theta decay. First quarter will be hardly any theta decay, and the highest. So there are two concepts. Highest theta decay will be in the second and third quarter. Okay, so if we understand that what we want, we can strategize accordingly. The strategy that I'm going to show you is a little unusual. I mean, it's different than what we normally see. So what do we do in this strategy? I'll be very quick to show you. Do you buy or sell? So here, this is going to be a selling strategy. We sell options. Okay, what options do we sell? Either bank nifty or nifty options we sell. Weekly or monthly, we are going to sell monthly. What is the concept behind this monthly option selling? If we go to the previous slide, my whole premises or thesis is that there is a sizable theta decay, okay, between the second and the third quarter of any option expiry time period. For example, if you're doing weekly, so you divide the weekly divide by 4 time period, and the second and the third quarter will give you a sizable amount of theta decay. It might not be the fastest, but it will be the most sizable. And that's the same logic that we are going to apply in the strategy. What the strategy says, when do we sell? You sell 21 days to expiry is left. Okay, so if expiry is around 27, 28 or 29 days, when 21 days to expiry is left, that's when you sell your options. So you basically sell an option after the first week. So after the first week has happened, around the Thursday of the first week evening, that's when you sell your option. Risk management, this is the most important part. How do you manage your risk? Are we going to take a position which is open? No.
This is a positional call. It's not an intraday call, because we are not going to square off. I'll tell you when to square off. But when you take this, we are going to buy wings. And are the wings 1:1? No. Uh, and how far are the wings? The wings are around 7 delta. When you say 7 delta, I don't know, you if you don't get it, then mm, the delta of that strike is 7. If you can't conceptualize that, it is around 5% away. So if we are at 40,000 bank nifty, 5% away would be 800 points, 200, 2000 points away uh, for bank nifty. Call and put. So what are we going to do? Are we going to buy call or put? So are we going to sell call or put? We are going to sell both call and put. Are we going to buy wings? Yes, it will be, both will have wings. So it's going to be a kind of iron butterfly. How further will be the wings? The wings will be approximately 5% or 7 delta. I mean, you get sophisticated tools now to compute your delta. And if you get that 7 delta, you will exactly, if you put 7 delta, you will get the strike price at which you will have to take the wings. When to square off? To square off is 7 days to expiry. So when you take the uh, call, as in when are you going to sell? 21 days to expiry means at the end of first week on a Thursday evening. When are you going to square off? On the just before 7 days to expiry. Okay. So expiry week you are leaving off. First week you are leaving off. The middle 2 weeks is where you are trading. Okay. That's when you're creating a position. And what are you creating the position for? You're creating a position to get delta as much as possible. Okay. So now what is the quantity of wings that you take? So if you are taking 2 lots, so here in my back testing or in this strategy that which I'm showing, if you are taking 2 lots, you have to take a wing of 3 lots. So it is 1.5 times. The wings both up and down will be 1.5 times. I mean, just as a question to the audience to understand, uh, why would I do, why would I take wings which are more in quantity? Anyone? I mean, if quickly, if someone could answer, why would I do that? I mean, if anyone wants to take a guess, or why would I'm basically selling 2 lots and covering, or I'm taking a cover of 3 lots. Okay, I think someone has answered. No questions. No. Okay. No, I needed an answer, but I guess there's no one who's answering. So I would do that as part of my risk management strategy. Okay. To minimize loss on hedge or hedge the position. Mm, I guess, yeah, that's the answer, to minimize loss or hedge the position. So I'm not just hedging the position, I'm also trying to make money out of this. If something goes drastically wrong against me, what am I doing? I am selling a call and a put, both. Agreed? I'm selling. So what is the most favorable regime for me? What is the most favorable outcome for me? If the market is standstill, it doesn't do much, it is here and there languishing around 0.5% to 1%. If that happens, I will be the most happy person doing this strategy. Now assume market is not going to behave the way you want it to, right? Market has its own nature. It will go up or down, or it'll have wild swings. In case if it has wild swings, I mean, it goes up further a lot. I mean, if let's annotate here, you have sold something and you have covered here. You have covered here. Now the cover is 1.5 times.
The cover is 1.5 times. The reason for such a cover is so that if tomorrow the market shoots up very high, okay, you start making a lot of money here itself whenever it starts, its journey almost towards that strike price where you've taken a cover. You will start generating a lot of profit. That's what this will also do. However, if it expires somewhere here in between, okay, you will tend to lose money. If it expires somewhere here in between, you will tend to make money. So there is this gap where you will tend to lose money in this strategy. But as soon as, if either ways, call or a put is going one direction in a very fast way, I mean, when the gamma is shorted up, that's when you will make a lot of money in this strategy, uh, be it a gamma shoot up in the call direction or a put direction. I mean, one second, there is someone who is okay. So आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक कॉल, फॉर एग्जांपल 40,000 का बैंक निफ्टी का कॉल, मैं कॉल भी बेच रहा हूँ और पुट भी बेच रहा हूँ, दोनों बेच रहा हूँ, और अराउंड 5% ऊपर या नीचे, 5% ऊपर बोलेंगे तो 1% कितना हुआ, 400 हो गया, तो 5% कितना हो गया, 2000 पॉइंट, तो ये हो गया 42,000 और ये हो गया 38,000। ये 38,000 का मैंने कॉल बाय कर दिया, पर यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी सेल की थी, यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी बाय कर ली, यहाँ पे भी 2 क्वांटिटी सेल की थी, यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी बाय कर दी। सो ये मैं 3 इसलिए बाय कर रहा हूं कि जब मार्केट मेरे अगेंस्ट बहुत फास्ट जाता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ नुकसान स्टॉप नहीं कर रहा हूं, मैं कमाने की वृत्ति रखता हूं। मेरा फोकस है सिर्फ स्टॉप लॉस लॉस को कम नहीं करना है। ये बहुत फास्ट अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मैं कमाऊंगा, वैसे ही बहुत फास्ट मार्केट अगर नीचे गया तो फिर भी मैं कमाऊंगा। अगर मार्केट एक जोन में रहा तो मुझे कमाना ही है स्ट्रैटेजी से, क्योंकि ये इतने दूर वाला विंग्स है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा दिया नहीं है इसके लिए, हालांकि मैंने 3 गुना लिया, फिर भी मैं ज्यादा पैसा नहीं दे रहा हूँ। तो अगर एक जोन में रहा तो मुझे कमाना ही कमाना है। पर मार्केट ये थोड़े जोन से ऊपर गया और पूरा ऊपर भी नहीं गया और थोड़ा बीच में लटके रहा, तभी मैं ये स्ट्रैटेजी में गवाऊंगा। हावेवर इतना समझ लीजिए, ये जो मैंने ऑप्शन बाय किया है ना, उसका थीटा भी फास्ट डीके नहीं होगा, क्योंकि मैं 3rd वीक तक मैं ये ऑप्शन वापस निकाल रहा हूं। मेरा ये ऑप्शन का पूरा गेम है 2nd और 3rd वीक के बीच में, 2nd और 3rd वीक का ही गेम है। मैं 1st वीक के एंड पे लेता हूं और 3rd वीक के एंड पे बेच देता हूं। तो फास्ट जो थीटा डीके होता है वो नहीं होगा। यहाँ पे भी कुछ, जब भी मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा यहाँ पे भी मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, ये विंग का भी मेरे को कुछ पैसा मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो लास्ट वीक में कमाने वाले हैं वो बहुत है, उनको कमाने दीजिए। ये 2nd और 3rd वीक का प्ले है, which in terms of quantity is the highest, the highest theta decay in terms of absolute value happens in the 2nd and 3rd week. The fastest theta decay happens in the 4th week. So this is what we are doing. What is the capital required? I'll just clear this. Just give me a second. ये स्ट्रैटेजी के लिए
कैपिटल रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपए, ओके सॉरी 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए का कैपिटल रिक्वायर्ड है, 2 लॉट्स ले सकते हैं आप। जब 4 लाख रुपए का कैपिटल करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस, इसमें एक ये अजम्पशन है जो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। ये स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस है 100 वीक के लिए, 100 वीक का बैक टेस्टिंग है और 175% कमाते हैं। तो मोटा मोटी एक वीक में 100 वीक्स में 175% कमाते हैं, तो एक वीक में 1.75% कमा सकते हैं। However, you understand, I am assuming that the capital is deployed only for 2 weeks, not 4 weeks. वरना आधा हो जाएगा आपका रिटर्न। बट मैं ये सोचता हूँ कि जो कैपिटल 2 वीक में आपका ब्लॉक हुआ है, बाद में 4th वीक में आप कोई और स्ट्रेटेजी में प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में भी और वो कैपिटल अवेलेबल है। तो जो 2 वीक में आपका जो कैपिटल ब्लॉक हुआ है, ऑन एन एवरेज 1.75% पर वीक कमा के दे सकता है ये स्ट्रेटेजी ऑन एन एवरेज। And there are certain questions. Wait. How is theta decay calculated? It's a good question. Theta decay calculation मैं अभी नहीं जाऊंगा, but I would, there are many. So basically, अगर आप दूसरे सब फैक्टर्स को स्टैंड स्टिल कर दे और सिर्फ टाइम वैल्यू को गिने, और उसमें से आप इफ यू सी द प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, तो उसमें इफ अदर्स, फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा का कोई रोल, तो डेल्टा को न्यूट्रल कर ले आप, दूसरे सब फैक्टर्स को अगर आप न्यूट्रलाइज कर दे, और आप अगर देखेंगे वेगा को भी सेम रहने दे, एज इन वॉलेटिलिटी अगर सेम रहने दे, देन आप देखेंगे कि जो भी चीज हो रहा है, जो भी एक्शन पैन आउट हो रहा है, वो डेज टू एक्सपायरी का हो रहा है। सो देर आर अदर फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट। आई मीन इफ यू हैव अ ब्लैक शोल्स फॉर्मूला, आई डोंट नो इफ यू नो ब्लैक शोल्स, बट ब्लैक शोल्स में फॉर्मूला है, उसमें 5 वेरिएबल होते हैं। वो 5 स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी, ये सब अगर आप डाल दे, और वॉलेटिलिटी अगर ये सब डाल दे, उसमें से आप और इसमें नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी होगा, वहां से अगर आपको प्रीमियम मिलता है, तो वहां से आप डिराइव कर सकते हैं कि वह थीटा कैसे एक दिन के बाद में दूसरा दिन, व्हाट इज दैट एग्जैक्ट थीटा वैल्यू जो आपका डीके हो रहा है। ये आपको कहीं सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएंगे ये, और आप बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे तो उसमें भी मिल सकता है आपको। सो देयर आर वेरियस वेज टू नो दैट। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस एंड आई, okay, so option strategy backtest statistics, strike rate is 60%। strike rate मतलब 100 ट्रेड किए उसमें से 60 ट्रेड राइट पड़े। टोटल पीएनएल 1,67,460, ये आफ्टर एक्सचेंज चार्जेस है, ये नेट पीएनएल है। प्रॉफिट फैक्टर 2.1, विन काउंट इज 31, लॉस काउंट इज 21, टोटल काउंट इज 52। अगर ये सैंपल साइज है, 52 ट्रेड्स लिए गए, उसमें से 31 विनर निकले और 21 लूजर निकले। एवरेज विन पीएनएल ये है, हर एक जो जितने विनर्स है, 31 विनर्स है, और जितना टोटल विन हुआ, तो एवरेज विन कितना हो गया, 10,410 रुपया विन किए हुए। एवरेज लॉस पीएनएल क्या हो गया, 7,300। सो फॉर अ लूजिंग ट्रेड यू आर लूजिंग, हर एक लॉस मेकिंग ट्रेड पे आप 7,400 रुपया गवा रहे हो, हर एक विनिंग ट्रेड में आप 10,410 रुपया कमा रहे हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड, एंड उसमें भी स्ट्राइक रेट 60 है। 50 होता तो ये समझ सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस। स्ट्राइक 60 है, मतलब राइट ज्यादा जा रहे हो रॉन्ग जाने के बदले। तो द वाइड द गैप
widens towards profitability, and that's how we are able to make profit here. ये कोई बहुत fantastic profit नहीं है. Again, this is not mind-boggling profit. However, it's a very simple strategy which can make you money. अगर आपको पैसा बन रहा है तो आप क्यों ना बोलेंगे? Let the money be made if money is getting made. सिंपल थीटा डीके है. ये वर्जन को आप मोड़ मोड़ सकते हो. इसको एक थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर्स डाल के स्टॉप लॉस कर सकते हो, थोड़ा स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स डाल के स्टॉप लॉस भी कर सकते हो, इसका थोड़ा प्रॉफिट टारगेट भी रख सकते हो. ये सब करके इसको एनहांस ही किया जा सकता है. ये बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी देगी आपको. ये निफ्टी में भी चलती है और बैंक निफ्टी में भी चलती है, दोनों में चलती है. सो आई मीन, again, some questions on this before we go ahead. I should expect, because मैंने तो strategy बता दी है. अभी मैं questions expect करूंगा. ओके, एक्सचेंज चार्जेस इसके अंदर, एक्सचेंज चार्जेस के बाद है ये पीएनएल, मतलब एक्सचेंज चार्जेस को लेस किया गया है. ये सब स्ट्रैटेजीज आप कोड कर सकते हैं. हम लोग ने कोड की है, पाइथन में भी कोड कर सकते हैं, और इसको एल्गो फॉर्मेट में ले सकते हैं. तो एल्गो फॉर्मेट में आप basically you have exchange API. I'll just tell you how the whole thing works. Now, most of you are brokers, and now आपके पास एक CTCL होगा. वो CTCL पे, वो CTCL है, वो दो तरफा काम करता है. एक ऑर्डर राउटिंग करता है और एक रिस्क मैनेजमेंट करता है. दो चीज मेजर करता है एक CTCL. आपके पास वो CTCL पे एक लेयर आ सकता है, या आप जो अपना सर्वर पे जो डेटा है वो आप एक्सपोज कर सकते हो क्लाइंट्स को in a limited manner, so that the client is able to put in a soda or a trade through your CTCL into the exchange. So आपके client एक API bridge, API is application programming interface. ये API through आपके सर्वर्स के CTCL के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. वहां पे पूरा जो भी फिल्टर्स है वो सब फिल्टर डाल के आपका जो ऑर्डर राउटिंग सिस्टम है वो एक्सचेंज में जाएगा और एक्सचेंज उसका सौदा करेगा. नाउ वो जो आप मैन्युअली पंच करते थे, ये ट्रेड आ गया, ये ट्रेड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है. Rahi Gandhi is asking how much is taxation on this profit. It's very clear. This is business income. आपको 33% टैक्स लगेगा, जो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट है फॉर बिजनेस इनकम, वो टैक्स लगेगा. However, you can claim certain expenses related to, for example, there are many people who has made Algo software for this strategy or similar strategies. वो सॉफ्टवेयर का जो भी कॉस्ट है वो डिडक्ट कर सकते हो, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिडक्ट कर सकते हो. अगर एक कोई कैपिटल कॉस्ट है तो उसको अपॉर्शन कर सकते हो थ्रू आउट 2, 3, 4 years of the life of that software. I mean, you can claim those expenses against the taxation that is derived from this strategy or any other trading strategy, I would say. Which are the other question? Okay. So, ये चीज निफ्टी में भी रन होती है. मेरे पास निफ्टी का भी बैक टेस्ट है, इसका भी बैक टेस्ट है, बट ये आपका कैपिटल सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड वीक में ब्लॉक करता है. यू स्टार्ट विथ द फर्स्ट वीक का थर्सडे at around 3:15 and you stop around third week ka Thursday, around that time. Let the trade happen as it wants to happen. I mean, you don't try to manage too much.
If you want, you can try and manage. If you manage, maybe if you try and backtest, you can better the result than what I already have. My point was that such strategies, ये तो सिर्फ इसका दिया, आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज है, फिर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज है, थीटा डी के आपके सामने नहीं है फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज कर सकते हो। लास्ट वीक में आप अगेन आपके कैपिटल को यूज कर सकते हो इन अ वे दैट लास्ट वीक जो क्विकेस्ट थीटा डी के होता है, एज वेल एज द प्रीमियम इज द चीपेस्ट, how between these two you can toggle your money to maximize your returns. Again, as I said, you have to see the whole environment, trading environment को देखना पड़ता है, मार्जिन कितना लग रहा है, कितना कैपिटल ब्लॉक हो रहा है आपका, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फेवरेबल हो सकता है, कुछ ज्यादा तो रिस्क नहीं ले रहे हो ना, all of that. I mean, in the last week the premiums are less, so maybe in last week and last day the premiums are even very less. You may think of some out of box strategy for that day. Similarly, first week the premiums are huge, but market the theta decay is very less. So maybe you can think something counterintuitive and bring out a strategy there. दिमाग खुला रखो, पूरे मैथ्स आप समझ लो मार्केट का, बाद में आप स्ट्रैटेजी करो। ये तो एक सैंपल स्ट्रैटेजी दी है, हजारों स्ट्रैटेजी बन सकती है, और वो हजारों स्ट्रैटेजी द होल आइडिया इज ओके। एक आपको एक आइडिया देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको एक ही चीज करना है, आपको नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाना है। नॉन कोरिलेटेड मतलब नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजी बोलेंगे तो एक स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी आपकी साथ में चल रही है, ओके, एक स्ट्रैटेजी या दो स्ट्रैटेजी साथ में चल रही है। जब भी एक का लॉस आ रहा है तो जनरली ऐसी दूसरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दूसरे का प्रॉफिट आ रहा है या दूसरा लॉस नहीं कर रहा है। अगर ये दो स्ट्रैटेजी आप साथ में चलाओगे तो उसका P&L कर्व बेटर हो जाएगा, वरना इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी का P&L कर्व ऐसा हो सकता है, ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो आप उसके प्रॉफिट के वॉलेटिलिटी से परेशान हो जाओगे। अरे यार, ये तो मैंने बहुत सारा पैसा गवा दिया, फिर वापस बनाया, फिर वापस गवाया। वेर एज 2, 3, 4, 5 स्ट्रैटेजियां जो एक दूसरे के प्रॉफिट, कभी जो लॉस कर रही है तभी वो दूसरा प्रॉफिट कर रहा है, जब भी वो प्रॉफिट कर रही है तो दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी में दम तो होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाने तक पहुंच गए हो, उसको सब कुछ समझ चुके हो, रिस्क रिवॉर्ड ये वो, और स्ट्रैटेजी बनाया है, स्ट्रैटेजी कभी ना कभी तो फेल होने वाली है। पर जब भी ये स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, जब भी नहीं चल रही है, तभी क्या चल रहा है और कौन सी स्ट्रैटेजी जो चल पाएगी वो एनवायरनमेंट में, अगर आपको वो पता है और वो आप साथ में चलाते हो, तो वो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आपको कैपिटल भी अच्छी तरह यूज करेगा, आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो रिड्यूस करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी स्मूथ करेगा। ओके, क्वेश्चन, 1 second. What's different between manual algo trade for this type of strategy? Tell about that for clients. Difference between manual and algo trade for this strategy is algo trade में अगर आप यही strategy algo से करोगे, फायदा 2-3 है। एक तो slippage कम आएगा। When you do it with algo trading, your slippage will be minimal. You can fire multiple, so you are going to fire 4 legs, right? आप कॉल फायर करोगे, कॉल बेचोगे, पुट बेचोगे, कॉल का कवर लोगे, पुट का कवर लोगे, ये सब एक साथ में हो रहा है। जब भी आप स्ट्रैटेजी को वाइंड डाउन करोगे, वो भी ये सब चारों 4 लेग वापस बंद करना है। ये सब फास्ट कैसे हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल इफ एल्गो ट्रेडिंग हो, तो आपका स्लिपेजेस सबसे कम होगा। जब भी आपके सिस्टम ने बोला अभी मैं ट्रेड लेना है, तो आप तुरंत ट्रेड ले लो। मैनुअल भी कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी इतनी फास्ट नहीं है, but there will be many strategies like scalping strategies or last day strategy
वो सब बहुत फास्ट होती है। उसके लिए यू आर बेटर ऑफ डूइंग एल्गो ट्रेड्स। Do algo need to be approved by exchange? So it's a interesting question. अगर आप अपना खुद का एक एल्गो सिस्टम बनाया है और वो आप लॉग इन करते हो और आप खुद ट्रेड अपना एल्गो फायर करते हो, so it is, so again there is some debate going on, but as far as I know, ये अपना खुद का एल्गो बनाया हुआ है। वो एल्गो खुद आप कोई भी एपीआई थ्रू फायर करोगे तो अलाउड है। जैसे जीरोधा में भी अपना एपीआई के थ्रू लोग अपने सौदे फायर कर सकते हैं। अभी तक उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आया नहीं है एज फार एज आई नो। हाउएवर यू आर मार्केट पीपल, यू वुड नो मच बेटर देन व्हाट आई डू। अगेन the biggest benefit of algo trading is so I'll tell you 5-6 benefits of algo trading. एक तो पहले कोई इमोशन नहीं आता है, अरे यार अभी लगता है कि यार मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा तो चलो ना यार पोजीशन रहने देते हैं, ज्यादा तीटा खा लेंगे एंड में, वैसा भी कभी फीलिंग आता है। तुम्हारे अगेंस्ट क्या है ये ट्रेड, तो ट्रेड काटना है पर आपने ट्रेड काटा ही नहीं, आपको लगा यार नो नो लेट इट बी लेट इट बी, मेरे को ट्रेड नहीं काटना है। वो इमोशंस इंटरफियर करते हैं, एल्गो में वो इमोशंस इंटरफियर नहीं करेगा। सेकेंडली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में करना है। ओके, तुमको तुम्हारे फैमिली के 5 अकाउंट्स है और पांचों अकाउंट्स में साथ में ट्रेड करना है, वो सब स्केलेबिलिटी कभी आएगी। यू कैन गेट स्किल व्हेन यू आर एल्गो ट्रेडिंग। आई मीन 5 अकाउंट में मारने जाओगे एक 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 एक, एक तो तब तक तो वो 15 मिनट निकल जाएगा। सो वो स्पीड और स्केलेबिलिटी कभी आएगी। प्रिसाइसनेस ऑफ प्राइस वो कभी आएगा जब आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब एल्गो ट्रेडिंग के एडवांटेजेस इतने हैं, उसके सामने डिसएडवांटेजेस तो काफी कम है। काफी लोग ऐसे बोलते हैं एडजस्टमेंट नहीं होता है, नहीं एल्गो ट्रेडिंग में सब एडजस्टमेंट वाले ट्रेड भी कर सकते हो। दूसरे क्या है, इफ यू डू मोर एंड मोर एडजस्टमेंट यू फील यू आर प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे। जब आप अपना शीट देखोगे वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। वेर इज बेसिक्स यू नो इट वेरी वेल। दूसरा, यू आर टोटली डेटा ओरिएंटेड व्हेन यू आर डूइंग एल्गो ट्रेडिंग। आप कोई अपनी मन गढ़ंत बात नहीं कर रहे हो, आप जो डेटा बोल रहे हो वही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेटजी क्या बोलती है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन विच डिड नॉट कम, व्हेन इज द स्ट्रेटजी in which regime it's not good and in which regime it is good. So थोड़ा हाई वॉलेटिल regime में जब भी विक्स हाई है तभी ये अच्छा है, जब विक्स बहुत लो है जैसे अभी था थोड़े दिनों पहले तो ये इतना अच्छा नहीं करता है। सो लो विक्स में और स्पेशली लो विक्स हुआ और मार्केट किधर मूव नहीं भी नहीं हुआ, आपने प्रीमियम भी इतना छोटा खाया फिर कुछ नहीं मिला, तो इट्स नॉट अ, are we it's not a great strategy. Are we selling ATM? Yes, we are selling ATM. We are selling 50 delta which is ATM at the ATM options बेच रहे हैं अपन और ऊपर नीचे के कवर कर रहे हैं। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी में अभी आपको आई हैव 10 minutes. I don't think there's enough time to tell you about calendar spread strategy. Calendar spread basically is moving on to the next month. Any hard stops for algo trading? Anything one should be aware not to do? So algo trading में 5-6 चीजें हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कोड होता है, जो एल्गो, जस्ट टू इंट्रोड्यूस रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वॉज ऑल्सो हेड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग रिस्क एट ईडलवाइज। सो हेड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग रिस्क एट ईडलवाइज। सो मेरा काम क्या था कि एल्गो मिसफायर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, कोड है ना अल्टीमेटली। आप स्क्रीन पे तो कुछ दाब नहीं रहे, व्हाट इज हैपनिंग इज एक पीस ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो शायद कोड इधर उधर करते हुए कोड में गलत कुछ चीज आ गई है, वो भी पॉसिबल है। नाइट फ्रैंक करके था, दैट कंपनी गॉट बस्ट बिकॉज ऑफ one change in the algo they did, and that change
was not passed. QC पास नहीं किया था, किसी ने टेस्ट नहीं किया था, प्रोडक्शन में डाल दिया और उसने मल्टीपल ट्रेड्स फायर करना चालू कर दिया। एक ट्रेड फायर करना था, वरना वो कंटिन्यूस लूप में चले गया, फायर कर दिया, पूरे मार्केट को डाउन कर दिया और उस पर इतना बड़ा लायबिलिटी आ गया। सो देयर आर वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल दैट। वन इज यू नो, एक आदमी के पास सिर्फ पूरा एल्गो का राइट्स नहीं रहना चाहिए, दूसरा आदमी देखना चाहिए कि मेकर चेकर होना चाहिए। एनी कोड शुड हैव अ मेकर चेकर। ओके, दूसरा है कि आपके ब्रोकर, आप ब्रोकर ही हो, अगर आपका क्लाइंट कुछ फायर कर रहा है तो उसका टर्मिनल लिमिट सेट कर दो, उसके क्लाइंट लेवल लिमिट सेट कर दो, और सब जो लिमिट सेट करने के बाद भी अगर कुछ आपको अगर कंट्रोल करना है तो थ्रॉटल कर सकते हो। थ्रॉटल, यू नो व्हाट इज थ्रॉटल? थ्रॉटल बोलेंगे तो एक ये होता है हाउ मेनी ट्रेड्स पर सेकेंड ही कैन फायर। सो अगर उसका एल्गो मिस फायर होगा, अगर आपका क्लाइंट है और एल्गो मिस फायर होगा और आपने थ्रॉटल लिमिट डाला है, तो यू कैन से बॉस 50 ट्रेड्स पर मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा और 5 ट्रेड्स पर सेकंड से ज्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, कुछ अनाप शनाप अगर कुछ डाल रहे हो एल्गो में तो वो भी कंट्रोल कर सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू कंट्रोल algorithmic trading environment, and that control is needed because sometimes the risk, maybe it comes once in 1,000 days, और कभी एक दिन आएगा, बट वो एक दिन बहुत बुरा आ सकता है। उसके लिए एवरी दिन तैयारी होनी चाहिए अपने को वो रिस्क मैनेज करने की। राही गांधी, कैन यू प्लीज एलाबोरेट विद एग्जांपल फ्रॉम योर पीएनएल स्ट्रेटजी? आई मीन, एक मेरे पीएनएल में बता सकता हूँ कि वन क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड, व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट पीपल पूछेंगे, व्हाट हैपेंड इन मार्च 2020? वो महीने में तो बहुत वॉलेटाइल था, बैंक निफ्टी कितना नीचे गया, अनबिलीवेबली नीचे गया। सो व्हाट हैपेंड? We were very profitable. We made some 25,000 on two lot in this strategy. Reason very simple. Bank Nifty went down so much and we were hedged. Our wings are 1.5%, 1.5 times. So तीन lot ये लिए थे, क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन लिए थे, और वो पुट ऑप्शन हमको इतना कमा के दिया दैट वी वर प्रॉफिटेबल। वेरी गुड। 2 or 3 things that when you initiate this, अगर 2-3 वीक में, फॉर एग्जाम्पल 2-3 वीक एक्सपायरी इज मोर टूवर्ड्स 3-4%, 2-3% ऊपर गया है, ऐसा एक महीना हुआ जहां से सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक के थर्सडे से थर्ड वीक के थर्सडे तक मार्केट 3 या 4% की रेंज में ऊपर गया है, मतलब ये लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया आपका। ऐसे 1 या 2 लॉस मेकिंग मंथ आ गया या एक लॉस मेकिंग मंथ आ गया, उसके बाद ये आप चालू कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी चालू कर सकते हो। दूसरा है विक्स अबव 17 से 23-24 के विक्स में ये बढ़िया चलेगा। Any other questions? So I'm saying algorithmic trading is a very important aspect of trading. I mean, if you uh, focus on algos, if you focus on creating algos, एक तो आप फ्री हो जाओगे, दूसरा स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ सकता है। आप हजारों क्लाइंट के लिए भी फायर कर सकते हो, हजारों, या फिर इफ यू आर एट क्लाइंट लेवल, देन मेरे क्लाइंट, मैं खुद के फैमिली अकाउंट्स में एक साथ में 4-5 ट्रेड फायर कर सकता हूँ, इतने मल्टीपल लेग्स है। सो हर एक में 4-4 लेग है, एक साथ में विदाउट स्लिपेज फायर कर सकता हूँ, मेरे को ज्यादा स्लिपेज नहीं आएगा, वही सेम टाइम पे फायर होंगे। मेरा ट्रेड भी अच्छी तरह मैनेज होगा, स्टॉप लॉस भी बेटर मैनेज हो सकता है, एंड आई एम मोर एट पीस ऑफ माइंड, एंड मेरा इमोशंस विद द ट्रेड आर लेस। So if my emotions are less, I have been able to trade more perfectly. So any other questions? Or was I very fast? We still have 5 to 6 minutes, but yeah, I mean, I would be glad to take some questions.
अबाउट 23 वी शुड एग्जिट। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, जैसे विक्स बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था, आई एम सेइंग प्रिफर्ड, बट एक्चुअली अगर विक्स बहुत ज्यादा ऊपर गया तो फिर भी यू आर प्रोटेक्टेड बाय द विंग्स। सो फॉर एग्जांपल जब भी कोविड के टाइम पे, या जब भी वो वॉर, रशिया का वॉर इनिशिएट हुआ था, तभी this strategy will make money. Even with very high wicks also it will make money. Which one is best strategy to best yield or margin? Which one is best strategy for best yield or margin? अभी ऐसे तो काफी strategies है जो आपके margin, for example intraday strategy, अगर आप intraday, just example दे रहा हूँ, इसके पास इसका statistics मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूँ, बट आपको example दे रहा हूँ। अगर एक ऐसा strategy हो जब आप intraday में आफ्टर मार्केट का जो भी ऊपर नीचे हो गया है 10 साढ़े 10 बजे तक या साढ़े 9 10 बजे तक, आप कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दो। विंग्स लेने का जरूरत नहीं है, आप स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि विंग्स विल कॉस्ट यू समथिंग, you don't need to buy wings. So this will be little naked strategy, but it is a intraday. So anyway intraday में तो आपका कवर होने वाला ही है। मार्जिन मनी ज्यादा लगेगा, बट इसके बाद आप इसको अगर स्टॉप आउट कर लेते हो, कोई भी एक लेग आपके अगेंस्ट जाता है तो उसको कैंसिल कर लो और दूसरा लेग को आप कंटिन्यू करो। फॉर एग्जांपल आज मार्केट नीचे गया तो कॉल शॉर्ट आपका कंटिन्यू करो, पुट शॉर्ट कैंसिल कर दो, एंड टिल एंड ऑफ द डे 3 5 3 10 तक इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दो। तो काफी लोग ये कर रहे हैं अभी। इट इज क्वाइट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। दूसरा यही है, यही सेम स्ट्रैटेजी, बट बहुत दूर के विंग्स, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो जाए। फॉर एग्जांपल दिन में अगर ऐसा हो गया कि कुछ प्राइम मिनिस्टर को हो गया और सडनली मार्केट ने 15 20% दे दिया, या ऐसा भी कुछ, जैसे निर्मला सीतारामन ने कुछ सडनली रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स अनाउंस किया था और बैंक सब 15 20% फट गए थे ऊपर, तो भी के लिए अगर बहुत दूर वाले विंग्स भी ले लो और उसको स्क्वायर ऑफ कर दो बाय एंड ऑफ द डे, तो आपका मार्जिन कम यूटिलाइज होगा इसके अंदर, एंड आप रिस्क भी प्रोटेक्टेड रहोगे, एंड यू कैन प्ले अराउंड। For broker, which is best low risk strategy with very low drawdown and good profit, so broker can earn brokerage and retain clients. अरे ये क्वेश्चन तो मैं नहीं समझा, मतलब ब्रोकर के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनको ब्रोकरेज नहीं लगता है, तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेडल्स या स्ट्रेंगल्स क्रिएट करो, आइदर स्ट्रेडल क्रिएट करो या स्ट्रेंगल क्रिएट करो मल्टीपल टाइम फ्रेम में। मतलब मार्केट ये 40,000 है और ये 40,000 से 1 1.5% ऊपर मूव हो गया, तो इसका जो लॉस मेकिंग लेग है उसको कैंसिल कर दो और वापस एक 41,000 पे आप एक दूसरा क्रिएट कर दो पोजीशन, फिर वापस एक 41,500 पे दूसरा एक पोजीशन क्रिएट करो, क्योंकि आपके लिए ब्रोकरेज नहीं है तो आप ऐसे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। कहाँ ना कहाँ तो सेटल होगा मार्केट, वो जहाँ सेटल हुआ वो काफी प्रॉफिट देगा, जहाँ नहीं सेटल हुआ हो गया उसको आप कट करते जा रहे हो, और अगेन मार्केट अगर स्विंग हो रहा है तो इसको भी स्टॉप लॉस डाल दो, तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा खा के भी अगर मार्केट दो के बीच में सेटल हुआ, you will win a lot of money. I mean, this is a different strategy, but I'm telling you where you are creating मल्टीपल सेंटर्स, मतलब आप अलग अलग सेंटर बना रहे हो, आपके ऑप्शन सेलिंग का, एटीएम ऑप्शन सेलिंग का अलग अलग सेंटर बना रहे हो, और कहाँ ना कहाँ तो थीटा, मतलब कहाँ ना कहाँ मार्केट एक्सपायर होगा, वहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दिस यू कैन डू व्हेन यू हैव काइंड ऑफ यू आर नॉट गेटिंग चार्ज फॉर ब्रोकरेज। ये चीज अगर आप ब्रोकर क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट तो कमाएगा, बट क्लाइंट को ब्रोकरेज में दिक्कत होगी, क्योंकि मेनी ट्रांजैक्शन ज्यादा है। व्हेन देयर मेनी ट्रांजैक्शंस ब्रोकरेज में दिक्कत हो सकती है, वेयर इज द स्ट्रेटजी आई शोड यू राइट नाउ हैज लिमिटेड ट्रांजैक्शंस, वो डाइजेस्ट कर सकता है। उसमें ड्रॉडाउन्स जो है, किसी ने बहुत ज्यादा पूछा नहीं ड्रॉडाउन के बारे में, हालांकि उसमें भी 15% के ड्रॉडाउन्स आ सकते हैं जो स्ट्रेटजी मैंने दिखाया है,
if, almost, I wouldn't say 15%, almost around 20% drawdown is expected on 4 lakh rupees. But you still can do that strategy, because आपको पता है जब भी ड्रॉडाउन आता है उसके बाद रिकवरी हो जाता है. कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कंटिन्यूस ड्रॉडाउन में रहता है. रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट है इसमें. सो एक महीना, तो दिस इज अ मंथली स्ट्रेटेजी. तो एक महीना या 2 महीना मैक्सिमम, 3 कंटिन्यूस मंथ ड्रॉडाउन गया नहीं है ये स्ट्रेटेजी में, तो आप समझ लो कि 2 महीने के बाद तीसरा चौथा महीने में आप कैपिटल बढ़ा भी सकते हो. अगर 2 महीना कंटिन्यूस ड्रॉडाउन आ गया ये स्ट्रेटेजी में, तो आप अपना कैपिटल बढ़ा दो, तो ये हो सकता है. यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. Any other question? No, I think we are done. There are no questions. I hope you guys got some wisdom out of what I was saying. I mean, you can still reach me on my. I'll just. So if you can just give your email ID. Or Yeah, I'll do that. So, you can reach me, and I will be happy to assist you. Even for algo trading, I'll be any brokers. I've helped many brokers with their setting up their algo desk, or if they need any, they have any questions on algo trading, or how to set up an algo desk, or how to get their clients do algo trading. I'll be happy to help. Okay, so I'll give vote of thanks. Session was indeed very engaging. Thank you, Devang Bhai, for bringing their expertise and experience in today's webinar. We appreciate having explained option trading strategies of derivative market. And I hope and it's going to be encouraging, encourage our members to trade option. I also thank Vaibhav sir for the remarks on today's webinar, and also thank you ANMI members for attending the same. Thank you, Devang. Thank you very much. I mean, I hope you had learned something out of it, and it was sheer my pleasure and my honor to be here and able to deliver some presentation at this forum and at this platform. It's our pleasure to have you for today's webinar. Thank you. Thank you, Vaibhav. Thank you, Shital, and thank you rest of the ANMI team. Thank you very much. Thank you very much.